starting with the gas and vapor. Now, what is the difference between gas and vapor? Gas is a substance which has no liquid particles in it. Okay. Okay. Or the phase transfer doesn't exist at the normal temperature and pressure, while vapor suspension. So vapor is a mixture of the liquid as well as the steam both. Okay, so it has the particles, liquid particles in suspension, that is to be called as a vapor. Gas obeys the perfect gas laws, steam doesn't obey. Gas is completely in the evaporated form of liquid. Gas is completely evaporated form of the liquid, while vapor is a mixture of liquid with the gaseous. On the gaseous status, vapor has a wet, dry, and superheated state. Okay, it remains in the gaseous status. It doesn't change its phases at moderate temperature and pressure. And the steam or the vapor, the phase transformation takes place, okay, at the normal or the moderate changing in the pressure and temperature. Specific volume of gas is more, specific volume of vapor is less. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, these are the examples of gas, and steam, NH3, vapor, etc. are the examples of the vapor. What is boiling point? The temperature at which liquid, the conversion of liquid to the vapor state, that is known as a boiling. Melting means solid into liquid. Okay. Now the formation of the steam at constant pressure from water at 0 degrees Celsius. So in exam, it may be asked, describe the formation of steam at constant pressure from water at 0 degrees Celsius. Or they may ask you, okay, represent the formation of steam on T5 diagram from water at 0 degrees Celsius. Okay, it is one of the same thing. Now here, for the formation of the steam, there are a number of points, the assumption we are taking. One is the frictionless pre-synthesis assembly. Second is, we take the 1 kg of water at 0 degrees Celsius. Okay. Third is, weight remains constant on the water, okay, at pressure T. Area of the piston is to be assumed as 1 meter square and volume of water is taken as VW. Okay. So condition A, that we start at 0 degrees Celsius. So that would be here. We start from here. Okay. So that is 0 degrees Celsius. And as you go on applying the heat, what will happen? Okay, 0 degree water को piston cylinder में हमने रखा हुआ है पानी. Okay, specific volume of water is there. अब हम इसको heat दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? Temperature of water. Yes, temperature increases. Temperature of water increases. ठीक है? So temperature of water increases, then what will happen? Enthalpy also increases. Okay. What about volume? Slightly increases. Slightly increases. Negligible increase. Negligible because phase transpiration won't be there. Okay. So water remains at water, and while you go on increasing, it will have the increase in the enthalpy from A to B. So A is water at 0 degrees Celsius, and what is B? What is status at B? B का क्या है? Sir, the water will be saturated. Water will be saturated. मतलब water will be saturated का मतलब क्या होता है कि that means water की अपनी capacity खत्म हो गई है और water doesn't remain in the water state and your first water particle is converted into steam. That would be at point B. Okay, so B से क्या होगा कि it is saturated water means उसको temperature लेने की उसकी क्षमता खत्म हो गई है. Now whatever the temperature you are giving, then the water will be converted into steam. So B will be the point at which the first water particles is converted into steam. Okay, so ये जो heat दे रहे हैं वो heat को क्या बोलते हैं? Yes, Sensible heat. A to B की sensible heat और second क्या है? Enthalpy of water. Enthalpy of water. तीसरा क्या है? और
Latent heat. नहीं, लेटेंट हीट यहाँ नहीं आ रही। सेंसिबल और लेटेंट हीट अलग अलग होती है। सेंसिबल हीट, or you can say enthalpy of saturated water, or you can say as a liquid heat, or it is a liquid heat. So up to B, it remains in the liquid state. Okay. Now when you go on increasing the temperature after B, then what will happen? It will start Pressure यहाँ पे will not बात decrease. into steam. क्या होगा? Conversion to steam Water starts. Conversion of conversion water. of, okay, so conversion of the water, conversion of steam, that will be starts. Okay, so water will be converted into steam gradually. अब gradually होगा तो temperature का क्या होगा? It remains constant. Remain constant. Temperature constant रहेगा. It remains constant. Temperature constant रहेगा. ठीक है. Pressure क्या रहेगा? Increase. Pressure क्या रहेगा? Constant, sir. constant. कांस्टेंट रहेगा. ये जो हमने यहाँ ये लिया हुआ है, दैट इज ए W हमने यहाँ वेट रखा हुआ है, दैट मीन्स द कांस्टेंट प्रेशर इज देयर इन द एयर. सो ऑन व्हाटएवर द कंडीशन ऑफ स्टीम इज देयर, वाटर टू स्टीम और सैचुरेटेड स्टीम और द ड्राई सैचुरेटेड और द सुपरहीटेड स्टीम, हर एक जगह पे वो स्टेज में प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा. ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर, एक प्रेशर के ऊपर हमने उसको फॉर्मेशन ऑफ द सीम ले रहे हैं. ठीक है. सो प्रेशर रिमेन सेम. So जो भी आप हीट दे But रहे when we increase हो, the temperature, won't the pressure increase? doesn't matter, doesn't matter. क्योंकि यहां से क्या होगा कि जो भी आप हीट दे रहे हो, ओके, हीट दैट विल बी यूटिलाइज इन कन्वर्टिंग द वाटर इनटू स्टीम. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वॉल्यूम का क्या होगा इसमें? इंक्रीज होगा वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि यस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. सो जो आप हीट दे रहे हो उसका जो वर्क होता है, हीट दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द मूविंग द पिस्टन इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन वर्क टू बी कैरिड आउट बाय द piston to moving in the upward direction. Okay. Or second thing is, this heat is to be considered as, ये heat को क्या बोलते हैं? Enthalpy of steam. Latent heat. Latent heat बोलते हैं और enthalpy of saturated steam. Okay, enthalpy of the steam. इसको latent heat क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि हमें ये दिखती नहीं है, मतलब यूटिलाइज कहाँ होती है वो हमें पता नहीं चलता है. A to B is called as a sensible heat. ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, थर्मोमीटर रख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि भाई हम हीट दे रहे हैं और ये इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट हीट इज टू बी सप्लाइड. सो दैट इज व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड एज ए सेंसिबल हीट. B to C आगे जाओगे आप, ओके, और D तक. सो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सेंस नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो व्हाटएवर द हीट इज टू बी देयर, दैट इज यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट द वर्क. You cannot sense it from the outside, and that is why it is to be called as a latent heat. So B to D is to be considered as a latent heat. ठीक है? Okay. And after D, okay, what will happen at D? Complete steam हो जाएगा. Saturated steam will be formed. हाँ? All the water particle convert 100% conversion हो But there जाएगा. will be saturated steam. Yes. Saturated steam. Okay. So B का क्या मतलब होता है कि first water particle is converted into C. और D का क्या होगा? Last water particle is converted into steam. Okay. So at D, all the water is converted into steam. That is why it is to be called as a dry and saturated steam. और B और D के बीच में वो wet steam रहेगी. उसमें steam भी रहेगी और water भी रहेगा. ठीक है? So that is why it is to be considered as a wet steam. So after D, when you go on applying the heat, then what will happen? Temperature of steam. will Temperature increase. increases. Temperature, pressure, everything is going on increasing because D, at D, you don't have any water particles or the liquid particles in suspension. That means at D, steam will obey the rules which is to be followed by the gases.
सो डी के बाद में आपके लॉज ऑफ गैसेस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी आपका लिक्विड पार्टिकल्स नहीं है। सो जो भी लॉज अपने को गैसियस लॉज की हम यूज करते हैं, दैट विल बी आफ्टर पॉइंट डी। टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, and at E, suppose at this instant, temperature is increases, so that the temperature at E is to be called as T soup. Okay, so that is known as a T soup, and the steam from D to E is to be considered as a superheated steam. Okay, so this you have learned it. Steam table also you have learned. Okay, and the first column is the pressure, second is saturation temperature, third is specific enthalpy of saturated water. Then sixth one is specific enthalpy of evaporation, and the sixth one is specific enthalpy of saturated steam. Okay, ये 6 टेबल है। आपको जो मैंने टेबल भेजे हुए हैं वो दो तरीके, वन इज दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज प्रेशर टेबल, के जहां पर फर्स्ट कॉलम आपका प्रेशर है। सेकंड टेबल इज आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ टेम्परेचर टेबल, मतलब फर्स्ट कॉलम आपका टेम्परेचर के रिलेटेड हमने बाकी सब वैल्यूज रखी हुई है। ओके, सो इट इज कन्वीनियंट, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू। एक और चीज थी स्पेसिफिक एंथैल्पी, मैं आपको पहले लेक्चर में बोला था, जहां भी वर्ड स्पेसिफिक आएगा उसका क्या मतलब होगा? per unit mass. Per unit mass. Per unit Per mass. kg. Always remember whenever the word specific is there, because all the values given here, that is per kg, that is the specific values given in this particular table. So if you want to find out the total enthalpy, then you have to multiply it by the mass, then you are getting the total enthalpy. Otherwise you are getting the enthalpy as specific enthalpy. Okay, ये टेबल आपको दिया हुआ है और वो आप डाउनलोड कर लेना ताकि हम वी कैन सॉल्व द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। ओके, ये भी आप सैचुरेशन टेम्परेचर राइट फ्रॉम 0 डिग्री टू द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। दिस इज नोन एज HF. ओके, सो HF इज इक्वल टू KW into TS minus 0. KW is specific heat of water, that is constant, that is 4.187. So HF आपको जब ही ढूंढना होगा एंथैल्पी ऑफ वाटर और सेंसिबल हीट, तो आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो। पहला है ये फॉर्मूला से, HF is equal to KW into TS minus 0 किलो जूल पर kg. ओके, और KW is 4.187. और सेकेंड इज आप स्टीम टेबल में फोर्थ कॉलम आप लोगे तो फोर्थ कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको HF की वैल्यू मिल जाएगी। Okay, this is HFG. Now one more thing, I think Joshi sir might have told you what is HF, what is HFG, and what is HG, and what is HO. HF मतलब fluid, fluid मतलब liquid, so HF होगी liquid की। HFG का मतलब क्या होगा? fluid and liquid both, F fluid and gas, so उसका mixture होता है, that is why it is to be called as HFG. Okay, fluid and gas, so that is the wet steam. From HFG you can easily understand that it is the specific heat enthalpy of the wet steam. HG आएगा, so that is the gaseous state, so that is the specific enthalpy of dry and saturated steam. Okay, freezing point means from liquid to the solid, phase changes. Evaporation means phase changes from liquid to the steam, that is to be considered as a evaporation. Saturated water means at a given pressure, water at the saturation temperature is called as saturated water. Wet steam is mixture of wet and steam. Dryness fraction is very important. Okay, क्योंकि ये हमेशा हर एक एग्जाम्पल में ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा। What is dryness fraction? It is small x, और कई बुक में स्मॉल q भी लिखा होता है। ओके, कई बुक में स्मॉल q भी लिखा होता है और कई में स्मॉल x लिखा होता है। It is one of the same thing, and that is to be considered as a dryness fraction. What is the equation of dryness fraction? It is the mass of steam divided by mass of the vapor. So vapor is nothing but mass of steam plus mass of water. So it is ms upon ms plus mw. Okay, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 1. ठीक है, so dryness fraction always varies from 0 to 1.
उसके इन बिटवीन में होगा 0 मतलब कंप्लीटली वाटर, दैट इज MW, और 1 मतलब कंप्लीटली स्टीम, उसके बीच में दैट इज ए वेट स्टीम. ओके, एंड व्हाट इज द wetness of steam is 1 minus x. 1 minus x. Very good. So dryness और wetness, x जो dryness x, तो maximum value उसकी 1 होती है, so wetness is 1 minus x. Okay, dry saturated means the last water particle is converted to steam. Superheated steam means when the temperature of the dry go on increasing, then the steam temperature is more than the dry saturation temperature, then it is to be considered as a superheated steam. Degree of superheat, that is also important, that is T sup minus Ts. ओके, टी सूप आपको जो टेम्परेचर दिया है वो, और टीएस आप जहां से आप टेबल में से लेते हो एट पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आई गई. आई थिंक अप टू दिस मच प्रोफेसर जोशी हैज टेकन यू. Yes, sir. यहाँ तक था ना आपका? Sir, this was the last slide. दिस वाज द लास्ट टाइम. ओके, ठीक है. इसके बाद में वी स्टार्ट विद द पीपीटीज. ओके, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर? कैन यू गिव मी एनी आइडिया? आपको सामने पड़ा हुआ है. क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? Sir, the pressure and temperature at which the latent heat is 0. लेटेंट इज 0. ओके, सो उसका क्या मतलब हुआ? The water is directly converted into steam. यस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी फेस. ठीक है, सो इसका ये मतलब हुआ कि यहां से यहां तक का हिस्सा क्या है आपका? वाटर है. ठीक है, लिक्विड स्टेट है. यहां से ये स्टेज का क्या है आपका? वेपर स्टेज है. और यहां से ये स्टेज क्या है आपका? गैसियस स्टेज है. सो 3 स्टेज होते हैं ये टेबल में. सो व्हेन यू गो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ओके, ये सब चीजें बढ़ती जाएगी, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा कम होता जाएगा. ओके, सो बीच वाला हिस्सा क्या है आपका? लेटेंट हीट का है. सो दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड एट वन पॉइंट दैट वुड बी 0. सो ये पॉइंट पे क्या होगा कि जो भी आप लिक्विड होगा दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्टीम विदाउट द फेस ऑफ द वेट स्टीम. जितना पानी होगा ऑन द स्पॉट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैस. Okay, that means the water and steam they coexist at a single particular point. ये इसको आपको कौन से प्रेशर और टेम्परेचर लिखा होगा? So that is 220.9 bar, that is the critical pressure, and critical temperature is 374.14 degrees Celsius. Don't try to remember this. You are allowed to use a steam table. Okay, steam table आप अपने पास रख सकते हो. जो मैंने लास्ट में आपको भेजा था उसकी हार्ड कॉपी हमारे पास है. And in exam we are giving you the hard copy of that particular steam table from college itself. Okay, so वहां पर आप क्या करोगे? लेटेंट हीट का 5th जो कॉलम है आपकी, कौन सी कॉलम? 5th कॉलम है. जहां पर 0 आएगा वो 0 पे जितना प्रेशर टेम्परेचर होगा that would be your critical pressure and critical temperature. That is clear? Okay, any doubt, anything else for this? No, sir. कुछ डाउट और कुछ है आपके क्वेश्चन? ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर. एंथैल्पी ऑफ वाटर एंड स्टीम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द एंथैल्पी ऑफ वाटर एंड स्टीम. सो फर्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ वाटर, that is the liquid enthalpy or the sensible heat H or HF. So amount of heat absorbed by 1 kg of water to change its temperature from the freezing point, that is 0 degrees Celsius, to the boiling point Ts is known as the enthalpy of saturated water. So temperature changes can be sensed, and that is why it is to be called as a sensible heat. So HF is equal to Kw into Ts minus 0. So where Kw is the specific heat of water, and that is equal to कितनी वैल्यू होती है उसकी? 4.187. 4.187. ठीक है, और you can directly find out from the steam table on your 4th column, that is HF. Now let us take an example. Calculate the sensible heat of 4 kg of saturated water at 50 degrees Celsius. Take specific heat of water at 4.187 kilojoule per kg Kelvin.
What is given? Mass has been given as 4 kg. Temperature of water is 50 degrees Celsius and specific heat of water is given as 4.187. Okay, so क्या करोगे आप? What is the equation? HF equals to M into HF KW, M M into into KW KW minus 0 minus minus, yes, KW into TW minus 0. Okay, क्योंकि हम saturated water 0 degree से start करते हैं, so automatically whatever the temperature is given, other would be your 0. So HF is equal to MW into KW into TW minus 0. So MW कितना है आपका? 4 into 4.187 into 50 minus 0, and that is equal to 837.4 किलो जूल. ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा आपका? 50 डिग्री सेल्सियस है आपका. ओके, ये आपका स्टीम टेबल है. दिख रहा है आपको स्टीम टेबल? ये 50 डिग्री आया आपका. सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी? HF is equal to 209.3. So from steam table at 50 degrees Celsius, okay, your HF is equal to 209.3. So that is kilojoule per kg. So per kg आपका HF इतना आ रहा है. So total enthalpy of water, saturated water, that is equal to 4 multiplied by 209.3. Okay, that is equal to 837.2 kilojoule. Is it clear? ये चीज आपको जब when you go for the bigger examples, this is the first step that you are going to do it. Okay, number of examples. So पहला स्टेप आपका ये आएगा और एक स्टेप ये आएगा कि जो आपको यूज करना पड़ेगा इसको. Okay, that is quite easy. Now the enthalpy of water and steam. So enthalpy of wet steam. So what is the enthalpy of wet steam? Okay. Suppose मुझे at C point पे enthalpy of wet steam लेनी है. So B पे मेरी enthalpy of saturated water है और D पे क्या होगा? Last water particle is converted into steam. So B और D के बीच में आपकी wet steam आएगी. Okay, suppose I want to find out the enthalpy of wet steam at point C. So total enthalpy इसकी कितनी होगी? Enthalpy from H to A to B. ये कौन सी होगी आपकी? HF होगी ये? Is it clear? और ये कितनी होगी? और ये कितना है? B से के D के बीच में आपकी एंथैल्पी कितनी होती है? HFG. नहीं, B और D पर आपकी ये टोटल एंथैल्पी कितनी है? ये एंथैल्पी आपकी कितनी है? Tell me. Yes. HG. HG. Yes, because the last water particle is converted into steam at point D. You understand my point? D पर आपकी completely water is converted into steam. So that means at D point और B और D के बीच में आपकी latent heat हुई और enthalpy of the evaporation. Okay, so ये दोनों के बीच में हुई. So naturally आपका C के ऊपर जो मैं suppose C लेना है मुझे. So dryness fraction suppose we are considering X. यहाँ पर dryness fraction B पे कितना होगा आपका? 0. और D पे कितना होगा आपका? 1 होगा. और B और D के बीच में कितना होगा? Between 0 to 1. Say it is X as a dryness fraction. Okay, that is between B and D. So here, this is HF, this is HFG. Okay, it is HFG, or here it is HG. So it is to be considered as this much is X into HFG. So your answer is H wet is equal to HF plus X into HFG at point C. So your equation for enthalpy of wet steam is HF plus X into HFG, and this is your specific enthalpy, not the total enthalpy. And suppose we want to have with the total enthalpy, then what should we do? Multiply the entire value with respect to mass. You are getting the
total enthalpy of the wet steam. Is it clear? Okay, calculate the enthalpy of 5 kg of 80% dry steam at pressure 10 bar. Okay, so 10 bar pressure दिया हुआ है, so हम कौन सा टेबल यूज करेंगे? प्रेशर टेबल यूज करोगे आप. Okay, so mass has been given as 5 kg, residence fraction x is 0.8, pressure of the steam is 10 bar. Okay, and we have to get the solution. हमारा इक्वेशन कौन सा है? HW is equal to what? HF plus X into HFG whole multiplied by mass. ठीक है? HF और HFG हमें कहां से मिलेंगे? 10 बार प्रेशर के स्टीम टेबल के ऊपर से. वो सपोज यहां पर मैं लेता हूं, ये मेरा है प्रेशर के ऊपर से. ठीक है, ये प्रेशर वाला टेबल है. सो वी हैव टू गो एट 10 बार. सो 10 बार आया ये मेरा. सो ये कितना आया? 762.81. ये क्या होगा आपका? इट इज HF. दिस इज योर HFG is 2015.3. Okay, so from steam table, HF is equal to 762.81 and HFG is equal to 201.3. So putting the same values in the equation, H weight is equal to MS into HF plus KH X into HFG. So that is 762.81 plus 0.8 into 2015.3, and that is equal to 1187.25. That's clear? So that is a simple example to find out the enthalpy of the wet steam. Okay. Now enthalpy of dry saturated steam, that is H dry. That is nothing but Hg. Okay. So that is HF plus X into HFG. Okay. So here we have the value of X is equal to 1. So that is equal to HF plus HFG. And that is going to be known as Hg. और आप स्टीम टेबल के ऊपर से ये जो कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, जो 6 वाला कॉलम है, that will directly give you the value of Hg. Okay. So from steam table, Hg can be directly read out at given pressure at column number 6. Okay. So now, a simple example, calculate the enthalpy of 5 kg of dry saturated steam at a pressure of 10 bar. So 5 kg is mass, X is equal to 1, that is the dry saturated steam. Pressure of steam generation is at 10 bar. So it is quite easy, that is from steam table, HF is equal to 762.81. Okay, and HFG is equal to 201.3. So Hg is equal to MS into HF plus HFG. That is 5 into 762.81 plus 2015.3. इसको ना लेना हो आपको, ओके, ये वैल्यू ना लेनी हो तो डायरेक्टली यहाँ पर ये 277.8.1 है, ये directly keep this value here, multiply by 5, that would be your answer, 13890.55. Okay. So this is also a simple example related to that equation. Now the third one is enthalpy of superheated steam. Now enthalpy of superheated steam means if you go on adding the heat to reset temperature from 0 to the saturation temperature, to saturation temperature to become into the dry saturated steam, and then to dry saturated steam it will be converted into superheated steam. Okay, so here it is. So we want to find out what should be this much enthalpy. So this is HF आएगी यहाँ पर, this is Hg आएगा यहाँ तक का, ओके, डी तक का, और ये आ जाएगा ऊपर का हिस्सा. So what should be the equation for this? It is HF plus HFG plus heat required to raise the temperature from D to E. वो इक्वेशन कौन सा होगा?
Can you have an idea what is the equation to find out the heat added from D to E? ये स्कूल में आप सीख चुके हो. Yes, any idea from D to E? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आप यूज कर चुके हो, MC डेल्टा T. EV is equals to nRT. नहीं, वो नहीं आएगा. MC डेल्टा T आप पढ़ चुके हो? Yes, sir. Yes, sir. MC डेल्टा T ये आपने बहुत साल यूज किया हुआ है. The same equation we are using here also. Okay, क्योंकि after D that would be obey the laws of gaseous, and from D to E the gas law, the heat required is nothing but MC delta T. Okay, so because we are taking your per unit kg, capital is always been there when it is answer is in kilojoule, that is the total enthalpy, and small h is denoted for the specific enthalpy. ठीक है? So HF plus HFG, that is your Hg, ये होगा plus Ks T sub minus Ts. Okay, and Ks is taken as 2.1. That is the specific heat of superheated steam. It's a standard value, that is 2.1. So आपको ये ढूंढने के लिए HF plus HFG plus 2.1 into T sub minus Ts. So this equation is for the enthalpy of superheated steam. Is clear? Okay. Calculate the heat required for 7 kg of steam at 50 degrees Celsius at a pressure of 15 bar. Mass is 7 kg. Temperature of steam is 250 degrees Celsius. Pressure of steam is 15 bar. So you know the equation, that is H sub is equal to mass multiplied by HF plus HFG plus Ks into T sub minus Ts. Okay, at 15 degrees Celsius you find out HF and HFG. At 15 degree, at 15 bar, okay, ये 844.89 1947.3, or directly you can take as 2792.2. It is up to you what you want to do it. Okay, and TS is this much. So because how can you say that this is a superheated steam? आपको मिसगाइड करने के लिए मैं यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ. So आपको ये when we go proceed further, I'll tell you that how to get the superheated and how to get the wet steam. ओके, ये मैं मिसगाइड के लिए भी कोई भी टेम्परेचर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस आप किसके साथ कंपेयर करोगे? 198.32. So because 250 is more than 198.32, that is why the steam is a superheated steam, and we have to obey the equation for using for the superheated steam. Okay, so H sub is equal to Ms into HF plus HFG plus Ks, that is 2.1. T sub minus Ts, that is 844.89 plus 1947.3 plus 2.1 into 250 minus 198.32, that is 20305.026. Is it clear? Now suppose instead of 250 degrees Celsius, okay, I won't write this. Calculate the heat required for 7 kg of steam having degree of superheat as 51.68 at a pressure of 15 bar. What should I do then? क्या करोगे आप? T sub minus TH is equal to 51.68. Yes. So ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा. 250 minus 198.32 करोगे आप, so that will be equal to 51.68. So अगर जो आपको डिग्री ऑफ सुपरहीट दिया है तो ये टेम्परेचर आपको देते नहीं है. Okay, so you can get directly, okay, this much as 51.68. So इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? 7 into 844.89 plus 1947.3 plus 2.1 multiplied by 51.68, and that is equal to your H sub. That's clear?
So either you have been given degree of superheat or you have been given the temperature. It is one and the same thing, but you have to find out the value of H2. Is it clear? So the first equation is the enthalpy of wet steam, HW. क्या होगा आपका इसका equation? Give me the answer. Just quickly, three equations are there. HF Is plus equal X to into HFG. HF plus X into H of G. Then second one is H of G is how much? HF plus plus HFG. Okay, HF plus HFG or H soup is equal to what? HF plus HFG H plus soup. C delta T. Okay, that is CP, T soup minus TS. Right, it's a specific way because we are using for the steam. So आप steam के लिए लिख रहे हो तो 2.1 that is specific heat of steam, that is Ks, multiplied by T soup minus Ts. Okay, so that is the third equation. And fourth one is HF is equal to KW into TS minus 0. ये चार इक्वेशन अभी तक जो भी किया है उसके ऊपर आपने ये ढूंढना है, ठीक है? ओके, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम? आपका जो थर्ड कॉलम है इसमें ये जो थर्ड कॉलम है आपका, that is of a specific volume. Okay, what do you mean by specific volume? Volume per unit mass. वॉल्यूम पर यूनिट सीधी बात है, स्पेसिफिक आया मतलब पर यूनिट मास होगा और साथ में क्या है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम पर यूनिट मास, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक वॉल्यूम. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर three types of steam, we have to have the specific volume of steam. We have three types of steams. One is a wet steam, another is a dry saturated steam, and third is a superheated steam. So how to find out the specific volume of these three types of steam? That we have to know. This is also very important because these are the small points which you keep it adding, and that will give you for the last examples related to the steam. Okay? So specific volume is containing of the wet steam containing both water and steam. So if mass of steam is X, then mass of water will be 1 minus X. So volume of wet steam is equal to volume of water per kg plus volume of steam per kg. So volume of water कितना होगा आपका 1 minus X into VW and volume of steam कितना होगा आपका X into Vs. But here specific volume of water is comparatively very less, so we have to omit the equation of volume of water, okay, because that doesn't change it. So specific volume of water is negligible, hence we can say that V wet is equal to X into Vs. ये याद रखिएगा, मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में कोई भी क्वेश्चन के साथ में, okay. So specific volume of wet steam is nothing but X into Vs. What is Vs? Volume of steam. What is Vs? What? ये small v आता है इसमें, ये remember. Small v और capital V में फर्क है. Small v होगा specific volume होगा. Specific जो भी चीज आप define करते हो वो small abc आती है. एक भी याद रखिए आप. ओके, स्पेसिफिक जो भी चीज आती है वो स्मॉल एबीसी में आती है और जो टोटल वाली चीज आती है दैट इज ऑलवेज इन द फर्स्ट एबीसी. सो स्मॉल वी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड कैपिटल वी इज ऑलवेज द टोटल वॉल्यूम. ठीक है, ये स्मॉल वी वेट इज इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल वी एस. व्हाट इज वी एस? Specific volume of steam. स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो बोलते हैं. ठीक है, दैट इज ए Vs. Suppose calculate the volume of 7 kg of 0.85 dry steam at a pressure of 18 bar. This is also important. This type of examples, small examples are there. Related मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे use करते हैं various terms. What is given? Mass has been given as 7 kg. Dryness fraction is 0.85.
18 बार। सो हमें 18 बार पे क्या लेना है वैल्यू? हमें एक ही चीज चाहिए 18 बार पे। कौन सी चाहिए हमें? स्पेसिफिक वॉल्यूम। VS चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है ना? VS चाहिए हमें। सो हमारा टेबल कौन से है? 18 बार पे। सो व्हेन वी गो फॉर 18 बार, ओके, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका? VS 0.11042। ओके, सो फ्रॉम स्टीम टेबल PS is equal to 0.11042 और कैपिटल V is हाउ मच? कैपिटल E का इक्वेशन कौन सा आएगा? टेल मी। मास से मल्टीप्लाई होगा एक। मास से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज आपकी है मीटर क्यूब पर केजी, उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो केजी केजी उड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? मीटर क्यूब मिलेगा। सो दैट इज नथिंग बट योर वॉल्यूम, ठीक है? सो टोटल वॉल्यूम इज मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। Volume of the wet stream, that is capital V. Okay, as I told you, capital V is for the total volume of wet is equal to mass multiplied by specific volume of the wet stream. Specific volume of wet stream कितनी है? हमने फॉर्मूला लिया था x into Vs. Okay, so that is mass multiplied by x into Vs. That would be the total volume of the wet stream. And putting all these values, we can have the value of volume of wet stream as 0.656999 मीटर क्यूब। ठीक है, ये छोटी चीज है, बट ये चीज आपको नंबर ऑफ टाइम आपको एग्जांपल्स में यूज करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स क्लियर? ओके, specific volume of dry saturation, how will you find out this? From steam table. Directly from the steam table. It doesn't have any equation. Okay, directly from the steam table at a given pressure or temperature we can find out the Vs. So at 10 bar, what will be the value? And suppose we want to find out the specific volume of dry saturated steam at 10 bar. So at 10 bar, it is nothing but 0.19444. Okay, so at 10 bar, the volume of Vs will be equal to 0.19444 meter cube per K. So the specific volume of dry saturated steam is Vs. Specific volume of superheated steam. Okay. Specific volume of wet steam आ गया हमारा x into Vs आ गया. Specific volume of dry saturated steam आ गया हमारा Vs आ गया. अब Vs के बाद में हम अगर जो आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन कौन से यूज करते हैं? Because that will obey the gaseous laws. Okay. So gaseous law equation. So हमारे पास इक्वेशन है PV is equal to T. Is constant. So that is कौन से दो पॉइंट हो गए हमारे? S and T sub. Okay, S, that is a saturated, dry saturated point, that is S point, and another one is the superheated point. Okay, and because pressure remains constant, so PS Vs by Ts is equal to P sub V sub by T sub. Pressure is constant है, so Vs upon Ts equal V sub upon T sub. So from this we can have the V sub is equal to Vs into T sub by Ts. हमें एक चीज कौन सी यहाँ खास ध्यान में रखनी है? कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें? That is, yes, the temperature you are taking here, it is always in किसमें होना चाहिए? Kelvin. Kelvin में होना चाहिए. Okay, so always this is the only thing which you have to keep in your mind, that because आपको जो भी एग्जाम्पल में टेम्परेचर दिया जाएगा वो आपको सेल्सियस में देते हैं. ओके, और जब भी आपको V sub फाइंड करना है तो you have to add 273 in that particular Celsius temperature. सर, yes सर वो PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट के बाद जो आपने वो P sub लिखा है वो कैसे आया सर? ये जो आपका ये जो इक्वेशन, ये जो फिगर है आपकी, ये ऐसे जा रही है आपकी. ठीक है, ये दो पॉइंट है आपके. ये कौन से आपका? ये TS वाला है.
ये पॉइंट से, और ये पॉइंट के बीच में we obey the gaseous laws. So ये superheated steam वाला है पॉइंट. Okay. Yes, sir. So we can take PV by P. यहाँ पर पोजीशन क्या होगी तीनों की? That is PS VS by TS होगी. और यहाँ पर पोजीशन अपनी कौन सी होगी है? That is P sub V sub by T sub होगी. So इसके ये दोनों के हिसाब से because pressure is constant, so ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका. So we have V sub is equal to VS into T sub by TS. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now let us go for the example. Calculate volume of 7 kg of steam at a pressure of 1.8 megapascal and temperature of 240 degree Celsius. सबसे पहले तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि I know that number of students they make the minor mistakes in initially and their entire example will be wrong. तो सबसे पहले प्रेशर, कोई भी प्रेशर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? बार में कन्वर्ट करना है. So 1.8 megapascal is equal to how much bar? 18 bar. It is equal to 18 bar. 18. क्योंकि bar means 1 bar is equal to 10 raised to 5 pascal 5. and 1 megapascal is 10 raised to 6 pascal. So दोनों के बीच में कितना आया? 10 का आया. So 1.8 multiplied by 10, that would be equal to 18. So 1.8 megapascal, that is equal to 18 bar. So that is your first step that you are going to do it. Mass is MS equal 7 kg. Pressure is 1.8 megapascal, that is equal to 18 bar. And temperature is 240 degree Celsius. ठीक है? स्टीम टेबल 18 बार पे हमें क्या लेना है? हमारे दो वैल्यू चाहिए हमारे 18 बार पे. कौन कौन सी दो वैल्यू हमें चाहिए? VS और TS दो चाहिए हमारे. ठीक है? सो 18 बार पे हम जाएंगे यहाँ पर. ओके, 18 बार पे आपका VS कितना आ रहा है? 0.11042 और TS कितना आ रहा है आपका? 207.15. So that is less than 240. So that means it is a superheated steam. Okay, so VS is 0.11042 and TS is equal to 207.15. So thus from this you can say that steam is a superheated steam, and V sub is equal to MS multiply VS into T sub by TS. Again add 273, that is very important. So 240 plus 273 divided by 207.15 plus 273. So that is equal to 0.8258 meter cube. Is it clear? So this is how we can find out this volume of the superheated steam. Okay. This is also a wonderful, very good example. एक और चीज याद रखिए. एग्जाम्पल ये छोटे छोटे ले रहा हूं मैं. एग्जाम्पल में आपको मास दिया होगा या वॉल्यूम दिया होगा. रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कीप इट इन माइंड फर्मली. कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया होगा, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बाद में जब जाओगे तब either you have been given the mass or you have been given the volume. Remember, ठीक है? अगर जो मास दिया है तो डायरेक्टली आपके पास मास है तो आपको कोई जरूरत नहीं टोटल स्टीम के लिए. लेकिन अगर जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ओके, तो आपका काम रहेगा वॉल्यूम से मास फाइंड करना और मास से फिर टोटल चीजें फाइंड करनी. ओके, उसमें से एक ही पॉइंट मैंने यहाँ लिया हुआ है, हाउ वी कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मास, and that is very very important while solving the examples. ठीक है? You understand what I'm telling you? एग्जाम्पल में आपको या तो मास दिया होगा या आपको वॉल्यूम दिया होगा. अगर जो मास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. अगर जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, then it is your prime requirement that you have to convert the volume into mass first. And that mass has been utilized for calculating the total value of enthalpy or whatever is to be asked. Volume is
12 meter cube. Pressure is 1.4 megapascal, that is equal to 14 bar. Dry saturated steam is there. Okay. अब इसमें what would be your temperature? Tell me. Temperature क्या होगा? How will you find out temperature? Steam table. Directly from the steam table. At 14 bar, 195.07, that would be your TS. Okay? Suppose dry saturated steam की जगह पर मैंने लिखा होता suppose 0.8 dry है, 0.8 dryness fraction है, it is dry. Okay? तो temperature कितना आता? Yes, give me the answer. Dry saturated steam में suppose दिया हुआ है, that is given as 195.07. अगर 0.8 ड्राई दिया हुआ है तो आपका टेम्परेचर कितना होता? 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Anybody else? सर सेम रहेगा. सेम रहेगा. It would be a same. मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? Right from 0 to 1, if you go on adding the adding the heat, okay, enthalpy goes on increasing, but temperature always remains constant. So आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होगा या वेट स्टीम होगा, हर एक में आपका टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा. कौन सा टेम्परेचर रहेगा? That is to be given in the dry saturated steam में दिया जाएगा. Okay, so don't. This is a very simple thing, but you will be misguided by this way. So concept should be clear. ठीक है? So जो भी dryness fraction दिया, it doesn't affect the temperature. Temperature always remains constant for the enthalpy of evaporation. That is clear? Okay. Vs is equal to 0.14084 and Ps is equal to 195.7. अब how will you find out the mass? Tell me. हमें mass ढूंढना है. स्पेसिफिक वॉल्यूम को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम इस मीटर क्यूब पर. सर डेंसिटी की जरूरत नहीं है ना, हमें इसी को ही यूज करना है. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है कि क्या करना है? वॉल्यूम से डिवाइड करना है. डिवाइड करना है. डिवाइड करना है. वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज व्हाट? मास. मास. दैट इज क्लियर. दैट इज क्लियर. यहां से आपको भी मिल जाएगा मीटर क्यूब पर केजी है. सो आप वॉल्यूम कैपिटल भी ले रहे हो और डिवाइडेड बाय स्मॉल भी ले रहे हो. सो इसका यूनिट क्या है? यूनिट के हिसाब से भी आप कर सकते हो ना. मीटर क्यूब है इसका और इसका मीटर क्यूब पर केजी है. सो के ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा. सो दैट वुड गिवन यू द मास. सो व्हाट इज मास? मास इज नथिंग बट वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम. पहले भी आपने कर चुके हैं कि मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम. ये एग्जांपल तो हमने पहले ही सॉल्व किया है. सो एक ही इक्वेशन आपको याद करना है, या तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम या मास इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम. एक ही इक्वेशन को मैं आगे पीछे करके आपको पूछूंगा मैं. सो यू शुड नो इट. Okay, mass of the steam is volume of the steam divided by specific volume. That is 1.2 divided by 0.14084, which is given in the table, and that is equal to 8.52 kg. Is it clear? Keep this in your mind because this is always the first step for solving a bigger example. So meter cube, वापिस से मैं कह रहा हूँ कि जब भी मीटर क्यूब दिया हुआ है आपको, so meter cube will be converted into steam. V wet is equal to X into Vs. Vs is equal to Vs, that is directly is there. Okay. And V of superheated steam, that is equal to Vs into T sub plus 273 upon Ts plus 270.